Grand opening of India's biggest rehab center at Electronic City, Bengaluru. Mission Walk, Bengaluru Neuro Rehab Center. Yes, my dear friends, Mission Walk Advanced Physiotherapy and Neuro Rehabilitation Center inauguration on Bengaluru, Sunday 24th August, with Mission Walk in association with HCL Ayurveda and Naturopathy of BS International School. Warm greeting from Mission Walk. Here because I have been witnessing the journey of Mission Walk since day one, and it has grown leaps and bounds with only one motto: to give uh, the quality of care, high quality of care. And then I sleep only. I met my fast driver. I never met any accident in Europe. I used to do the car by 280 kilometer speed. But God's grace, I never met any accident in my life. Only one accident in Bullet. I'm a very speedy driver also. But sometimes God is having some plans. The human cannot able to understand what his plans. Because I got L1 has been fractured and it was a very huge pain. I was at that time as a dead body. I couldn't able to move, at least if I move 1 centimeter also, then it is a shooting pain. It was a very horrible situation. Then God, I went to the orthopedic surgeons and other things, and they told to go to London or Singapore, this, that. The new technology is there, with that you are going to get cure. Then one of my another friend of orthopedic surgeon has told, no, Heather, don't go, because that is also new technology. It is injecting with the cement, something like, it is a big story. Today we inaugurated Mission Walk at HLC because the physiotherapy and Ayurveda, it is going to be impact a lot for the rehabilitation center, for ortho and neuro rehabilitation center. It is a first center with a unique combination and blend with Ayurveda treatment and physiotherapy treatment, because the HLC is having a 8 years experience. In the meantime, the same experience, Dr. Ravi, he is professionally doctor in physiotherapy. He did a lot in physiotherapy. Thousands of patients has been got cured, and a lot of children and speech therapy, several things is there. Dr. Ravi will explain about what we can able to do it here. And basically we had today we had a joint venture together to grow. This is the first center in Bangalore to have a Ayurveda and physiotherapy blend together to serve the humanity. सो HLC यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अभी भी कर रहा है. दे आर बेस्ट इन लाइक आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी एंड ऑल दोस थेरेपीज. सो मिशन वॉक एक सबसे बड़ा न्यूरो रिहैब सेंटर्स है इंडिया में. वी हैव 9 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया नाउ. सो हमको व्हाट वी आर मिसिंग इन आवर रिहैब इज वी आर मिसिंग आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी. सो आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी जनरली पेशेंट के रिकवर में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है रिकवरी में. सो वी वांट टू ब्लेंड एंड इंटीग्रेट बोथ लाइक आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी एंड जो भी हम रिहैब कर रहे हैं, मिशन वॉक जो भी कर रहा है हमारा स्पेशलाइज है. सो दोनों आप कॉम्बिनेशन में दोनों इंटीग्रेट करके करेंगे तो पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो सकती है, राइट. सो इसीलिए वी थॉट ऑफ कोलैबोरेटिंग विद वली सर. एक्चुअली दैट्स हाउ वी हैव डन दिस जॉइंट वेंचर along with HLC and Mission Walk. आपके नए सेंटर से कैसा वहाँ पर रिस्पॉन्स है? बेंगलुरु को क्या उम्मीद लेकर रहे थे? अभी तैयार जो है HLC से आप पैदा करने का. हाँ,
क्या करोगे? बेंगलुरु में हमको नॉर्मल सेंटर खोलना था, हम कहीं भी खोल सकते हैं, कमर्शियल वाइज कोई भी स्पेस ले लिया खोला, बट वी वांट टू इंटीग्रेट थ्रू द नेचर एक्चुअली। ये बहुत बड़ा कैंपस है, 3-4 एकड़ का कैंपस है एंड बहुत बड़ा रिहैब सेंटर हमने ओपन किया है। सो नेचर इज अ साइलेंट थेरेपिस्ट हियर एंड नेचर विल रिकवर वेरी फास्ट। जो भी पेशेंट है उनको वो दे वांट टू स्टे इन ए पीसफुल जोन एक्चुअली, उनको रहने का फैसिलिटी अच्छा है। यहाँ पे डाइट सेंटर है, वी हैव प्रॉपर डाइटिशियन एंड नेचुरोपैथी डॉक्टर्स, आयुर्वेदा डॉक्टर्स एंड वी हैव बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिजियोस इन अक्रॉस इंडिया। सो वी वांट टू इंटीग्रेट ऑल दोस थिंग्स एंड एक साथ में हमको करना था, इसीलिए वी थॉट ऑफ वेटिंग टू डू बेस्ट थिंग इन बेंगलुरु एक्चुअली। अभी तक बेंगलुरु में ऐसा सेंटर ही नहीं है। क्या है? मिशन वॉक एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है। न्यूरो रिहैबिलिटेशन बेसिकली हमारा मेन फोकस रहता है, बट हम ऑर्थो, जेरियाट्रिक, पीडियाट्रिक सब पे काम करते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली ट्रीट करते हैं जो लोग चल नहीं पाते हैं, जिनको चलने में तकलीफ है, या फिर जो बच्चों में तकलीफ है, उनको ट्रीट करने के लिए हमने ये सेंटर बनाया है। बेसिकली बच्चे हैं, वो बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो लोग हाइपर एक्टिव भी होते हैं, किसी को बात करने में तकलीफ होती है, स्कूल जाने में तकलीफ होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। हम उनको सारे ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे स्पीच थेरेपी यहाँ पे है, बिहेवियरल थेरेपी है, वो सारे देते हैं सो दैट एक बच्चा अपने डे टू डे लाइफ में जा सके। सिमिलर वे में जैसे बड़े लोग हैं, एक्सीडेंट से पहले नॉर्मल रहते हैं, एक्सीडेंट के बाद उनको बहुत तकलीफ होती है कि नॉर्मली हम बाहर कैसे जाएं, कैसे अपने रोजमर्रा के काम में कैसे करें, तो उसके लिए हम उनको इंडिपेंडेंट बनाते हैं। खाली फिजियोथेरेपी नहीं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी होती है सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो सके और अपना काम खुद कर सके। इस फील्ड में मुझे अभी 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने बैचलर किया है फिजियोथेरेपी में और मैंने मास्टर्स पीजी किया हुआ है न्यूरोलॉजी में, जो कि मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो 7 ईयर से हम इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। 7 साल में कोई केस आपने जो देखा है जो बहुत सारी जगह पे हुआ है, जो आपके यहाँ सक्सेस हुआ है? बहुत सारे पेशेंट हैं हमारे मिशन वॉक का। सर ने जैसे बोला, हमारा 90% सक्सेस रेट है। जो भी क्लाइंट आते हैं, देखिए सबको 100% जैसे पहले थे वैसे पूरा हो जाएंगे करके हम नहीं बोलते, लेकिन जिस कंडीशन में आए हैं उससे काफी बेहतर होके वो जरूर जाते हैं। कितने दिन का कोर्स रहता है? वो डिपेंड करता है सर, पेशेंट टू पेशेंट हमारा डिपेंड करता है, उनका कंडीशन क्या है। हम उनका पहले प्रॉपर असेसमेंट लेते हैं। जब हमारे पास कोई आता है, उनका भी कंडीशन क्या है, कितना मसल में पावर है, कितना इंडिपेंडेंट है, उनका प्रॉपर डिटेल्ड असेसमेंट होता है। प्रॉपर असेसमेंट के बाद हम फिर उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं, जो कि हम 1 महीने में फिर से असेसमेंट करके देखते हैं कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। उसके हिसाब से हम प्रोटोकॉल चेंज करके हम उसको आगे लेते हैं। यूजुअली कोई भी न्यूरोलॉजिकल केस हो, उसको मेजर इंप्रूवमेंट देखने के लिए 3 मंथ्स लग जाते हैं, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। 3 मंथ्स इज मिनिमम टाइम जहाँ पे हम एक मेजर चेंजेस देख सकते हैं। थैंक यू सर। ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಿಷನ್ ವಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ರಿಹ್ಯಾಬ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. HLC ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದ್ವೈತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನ್ಯೂರೋ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ HSR ಲೇಔಟ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಇರಲಿ, ನರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರಲಿ, GBS ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಾ, ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಇರಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇರಲಿ, ನೆಕ್ ಪೇನ್ ಇರಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಥೆರಪಿ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್. ಥೆರಪಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಾತ್ರ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮಾತ್ರ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ನ್ಯೂರೋ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ 5-6 ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. HLC ದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದನ ಇದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ, ನ್ಯೂರೋ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇದೆ, ನೇಚರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾವುದು ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಲಿ, ಯಾವ್ದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಇಂದ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಇಂದ, ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ, ನ್ಯೂರೋ ರಿಹ್ಯಾಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನೀ ಪೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಿಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಲಂಬೋಸ್ಯಾಕ್ರಲ್ ಪೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಒಂದ್ ಜನಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಪೇಷಂಟ್ ಏಜ್ ಇದೆ 70 ಇಯರ್ಸ್, 80 ಇಯರ್ಸ್, ಸರ್ಜರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಂಚಕರ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ.
ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಜರಿ ಫೈನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂರೋ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವ್ದಾನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ? ನಮಸ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಿಷನ್ ವಾಕ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಬೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಸೊ ನಾವು ಸುಮಾರು 7-8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳದ್ದು ನಾವು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ರಿಕವರಿ ಸೆಂಟರ್, ಏನು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಕೇಸ್, ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಬ್ರೈನ್ ಇಂಜುರಿ ಕೇಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ರಿಕವರಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಕನಸನ್ನು ನಾವು ನನಸಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ದಲ್ಲ, ಮಿಷನ್ ವಾಕಿದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೇಷಂಟ್, ಹಲವಾರು ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ, ಈಗ ಸುಮಾರು 28 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದಗೂ ನಮಗೆ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರ ಗುಣಮುಖವಾಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಸಿತ್, ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ. Dr. Kalyan Srinivas. So I work with Mission Walk. Like I'm a critical care and transitional care specialist. So transitional care is something where we take up patients from directly who discharge from ICU. So rehabilitation, as sir was telling, rehabilitation, physiotherapy is not only important like after discharging from ICU. So physiotherapy and rehabilitation, we should start as early as possible, right after the patient gets admitted into the ICU hospital itself. So that is where we specialize. Like that is what transitional care is. Like it is where 50% will be the medical care and the remaining 50% will be the rehabilitation and physiotherapy. That is how patients will improve a lot, like early, so that they can be discharged from ICUs, and later on they can accommodate to their daily lives far better if physiotherapy is started as early as possible. So as we are going with holistic approach in this HLC Mission Walk Center in Bangalore, soon we will also integrate this transitional care here also, like in a few months. So I think this will help a lot of patients, neuro patients, ortho patients, like post-cancer surgery patients who are getting treated in Bangalore. So yeah, that is. Dr. Kalyan. सेंटर में ये जो मिशन वॉक करके है, किस तरह का एक काम करता है, क्या क्या एक्टिविटीज हैं, किस तरह? ये जो मिशन वॉक और HLC से जो भी मिलाकर ये आज सेंटर ओपन हुआ है, ये बैंगलोर के जनता के लिए बहुत एक शुभ परिणाम है. क्यों बोले तो अभी सबको पता है कि कुछ भी बीमारी आए, जब डॉक्टर करने जाते हैं गोलियां खा लेते हैं, फिर वो वापस रह जाते हैं. मगर अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, अकेले खड़े नहीं हो पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तब उनको रिहैबिलिटेशन बोलते हैं उसको. तो फिजियोथेरेपी एक बहुत मायने रखता है, और फिजियोथेरेपी करवाने से वो जैसे चोट लगने के बाद चल रहे थे, बात कर रहे थे, फिर रहे थे, वो करने के लिए उनको बहुत आसानी होगा. और ये मिशन वॉक एक हजारों लोगों के जीवन में एक उजाला लाया है, और वही काम करने के लिए बैंगलोर में आया है. और ये सभी फैसिलिटीज बैंगलोर के जनता अगर ले लिए तो उनके जीवन में बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण चेंज आएगा उनको. सर ये जो सेंटर है, इस पे लोकेशन का एटमॉस्फेयर और आयुर्वेद किस तरह? हाँ, ये मिशन वॉक और HLC का जो भी एकजुट कर आकर ये सेंटर बनाने का एक ही महत्व है कि ये सब अकेले काम करने से लोगों को बहुत दिक्कत होती है ये सर्विस मिलने पर. मगर वो एक ही जगह पे आयुर्वेदा, फिर फिजियोथेरेपी और सभी डॉक्टर एक ही जगह रहने पर पूरे पेशेंट्स को केयर एक ही जगह मिलने से और उनका काम बहुत आसान हो जाता है, और पेशेंट तुरंत इम्प्रूव होने के है.
क्या नाम सर पूरा? मेरा नाम है श्रीनिवास नायक। शोभो, मैं विरार मुंबई से हूँ। मैं मिशन वॉक के होलिस्टिक लाइफ सेंटर के यहाँ से बात कर रही हूँ। यहाँ आके मुझे इतना अच्छा लगा। इस सेंटर में एंट्री करते ही इधर की वाइब्स इतने अच्छे हैं कि यहाँ आने वाले हर कोई पेशेंट को इधर तंदुरुस्ती लाइफ अच्छा मिलेगा, उनकी रिकवरी अच्छी होगी। और यहाँ की जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स है उनकी भी बहुत सारी उनके लिए भी बहुत सारे कामनाएं करती हूँ एंड आई एम विशिंग देम वेरी गुड। यहाँ के जो हैदर अली साहब है, उन्होंने जो डायबिटिक पेशेंट और जो छोटे से लेके बड़े लोगों के लिए ये जो सेंटर बनाया है, उसका बहुत बड़ा योगदान लोगों को मिलने वाला है। और हैदर अली साहब ने अपने अनुभव से बताया है कि डायबिटिक उनका कैसा विदाउट टैबलेट ही इज नॉट टेकिंग टैबलेट्स। तो ये बहुत बड़ा योगदान देने वाला सेंटर है। और यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ जो हेल्पर्स है, वो सब लोग बहुत अच्छे हैं। और यहाँ एक बहुत अच्छे तरह का सात्विक भोजन वो लोग देते हैं, वो भी बहुत बेनिफिशियरी है सबके लिए।